Assalamu alaikum and welcome to the 14th video on PPSC English lectureship interviews. So coming up with certain more questions which were recently asked. So the first one is, what do you know about the wasteland? So this is T.S. Eliot's book, The Wasteland, that we are talking about here. So wasteland basically talks about England, and especially after World War, when it was filled with desolation, destruction. It tells that we are now hollow men, like we have got nothing left within us. And this book was basically dedicated to Ezra Pound because he helped him. This talks about globalization, global plague, industrialization, and sexual elements are also there. We find that this talks about the absurdity of life, like whatever is happening. He talks about the religion. He talks about basically that is about that desolated society that may apparently be very beautiful, but as far as its morality is concerned, as far as its inner self is concerned, like that's why he called it hollow. कि inner self को देखा जाए तो इसकी काफी हद तक तबाही हो चुकी है. What is the meaning of your name? So this was this was a very different kind of question this time, and most of us, we really don't know the meaning, or we never ponder over it. So you should be knowing the meaning of your name. And a related question with this was, how has your name appeared in any verse? किसी शेर में आपका नाम use हुआ? So generally we do not expect such questions, but yes, they were asked here in the interview, so you must be prepared for such questions as well. How to write a good essay? So this is logical. How to write a good essay? Now that writing of a good essay starts with brainstorming, that you must be first, like what we do is we start writing an essay. So what it says is you need to brainstorm, you need to think about the ideas, you need to gather them in a sequence, you need to maintain that sequence within your mind. You can jot down those things somewhere, and then you need to plan what is necessary and what is irrelevant that you need to eradicate from that essay. और क्या चीज important है जो उसमें रहनी चाहिए. Then your essay should be without headings. So आपके जो essays हैं, आपके essays में heading नहीं आएंगी. Rather you will have topic sentences. तो आपका जो topic sentence है, that will be talking about the complete paragraph. So that will be used as a heading. In that, what you can do is what is better to use is कि आपका एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड हो, और आपकी एक जो बेसिकली पैराग्राफ है वो दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड हो. इसको हम कनेक्टिंग हुक्स कहते हैं. बेसिकली हम एक कोहेसिव रिलेशन बनाते हैं उसके दरमियान, और हम ये देखते हैं कि हर लाइन दूसरी लाइन से उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, और हर पैराग्राफ जो एंड हो रहा है वो ऐसे एंड हो रहा हो कि उसकी अगले पैराग्राफ की बिगिनिंग का उसमें हम एक हवाला दे दें. ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन इसमें हवा में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एक सीक्वेंस उसके अंदर मेंटेन हो. सो वो जो एसे राइटिंग है हमारी, दैट इज टू बी अ कनेक्टेड होल ऑल टुगेदर. और जो आपका कंक्लूजन है जिसको नॉर्मली हम मिस आउट कर देते हैं कि टू कंक्लूड वी कैन से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, or to conclude we can say that we should be aware of terrorism and we should avoid from such social evils. इसमें what we need to do is we need to summarize the whole of the essay, कि हमने ऊपर क्या क्या बात की है इसकी समरी देना conclusion में जरूरी है. So what is a topic sentence? Topic sentence works like a heading of a paragraph. So that is about what is going to be talked about. अगर आपके पास 8 different thoughts हैं एक ऐसे से related, तो उसके 8 topic sentence बनेंगे जो कि 8 headings को replace करेंगे. What is the difference between a topic sentence and a thesis statement? So this is very simple. अगर हम इसको देखें तो topic sentence जो है और thesis statement, ये sentences हैं basically जो कि writing में ideas को express करने के लिए use किए जाते हैं. लेकिन जो एक strong set है
टॉपिक सेंटेंसेस का, यानी a combination or the group of those topic sentences, ये these are which are supporting the same idea basically altogether. So these are a thesis, or these are a thesis statement. So a thesis statement, which is the main point of a whole essay, is usually found at the end of the introduction. वो introduction के end में आता है, जिसमें हम बता देते हैं कि this is what we are really going to talk about, and all the topic sentences directly or indirectly उसको कहीं ना कहीं से justify कर रहे होते हैं या compliment कर रहे होते हैं. What is grapevine in informal communication? So grapevine जो है basically ये that is part of informal communication, ये formal communication का हिस्सा नहीं है. इसे ग्रेप वाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ग्रेप वाइन्स, अगर आपने ग्रेप को देखा उसके प्लांट को, तो बिल्कुल साइड बाय साइड उसके अंदर उसके बंचेस होते हैं, और उसके ये जो जहाँ पे इनका ऑर्चर्ड होता है, ग्रेप्स का ऑर्चर्ड, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर, और उनमें फिर आपस में जब वो बात करें तो आपस में कॉमनली नॉलेज शेयर भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं. सो दैट न्यूज प्रिवेल्स वेरी फास्ट. सो इसलिए से इट इज एन इनफॉर्मल वर्क प्लेस डायलॉग इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. It is characterized by conversation between employees and superiors that do not follow any prescribed structure or rule-based system. So it spreads rapidly and likely touches each person throughout the organization. So इसका कोई यानी सर पैर या इसके कोई benchmark या इसका कोई एक pattern नहीं होता. This goes in any pattern. Now, next is, in which wave of feminism are we living? So tentatively देखा जाए तो we are in third wave of feminism, but now the fourth wave has also like evolved in which we are living. This is the digital age of feminism, जिसमें जो हम जैसा कोविड में देख रहे हैं कि डिजिटल जो थिंग्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, they are used to talk about feminism and the rights of women. So this is what we believe is the fourth wave of feminism. What is stylistics? Stylistics जो है, that is a branch of applied linguistics and concerned with the study of style in text, especially but not exclusively literary works. So इसे literary linguistics भी कहा जाता है. इसको basically that is stylistics is a bridge between linguistics and literature. Normally हम एक किसी book का stylistic analysis करते हैं, किसी poem का stylistic analysis करते हैं. So we try to see कि what kind of words are used, what kind of like meters are used, कौन सी चीजों को बार बार इसमें use किया, like उसमें किस तरह के जो राइम स्कीम यूज की गई, राइमिंग वर्ड्स कौन से यूज किए गए, कौन सी पोइटिक टेक्निक्स यूज की गई, कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज की गई. सो इस तरह मुख्तलिफ हम तरीकों को यूज करते हैं. सो दिस इज स्टाइलिस्टिक्स. अगर इसके साथ जो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज के डिफरेंस क्या है स्टाइलिस्टिक्स का और क्रिटिसिज्म का. क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड इज expression of like that is an analysis or a judgment of merits or faults of literary or artistic work, जिसमें हम पोइटिक जॉनरास को लेके चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा जॉनरा कैसा है और कौन सा जॉनरा, अगर हम कंपैरिजन करें दो मुख्तलिफ जॉनरास का, या कौन सी एज ज्यादा बेटर थी, या किस एज के अंदर कौन सा काम ज्यादा अच्छा हुआ, पोइट्री किस दौर की ज्यादा बेहतर है, नॉवल किस टाइम में अच्छे लिखे गए, फिर कौन सा क्रिटिक अच्छा है, कौन सा नॉवलिस्ट अच्छा है, किसकी थ्योरी अच्छी है, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी में क्या फ्लॉज हैं, कॉलरिज की थ्योरी में क्या चीज अच्छी है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इन डोमेन ऑफ क्रिटिसिज्म. फिर उसके बाद मुख्तलिफ थ्योरीज भी हैं जिसमें हम देखते हैं कि जैसा लाइक पोस्ट कॉलोनियल है, जिसमें डिकंस्ट्रक्शन अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच है. सो ये सारे इस क्रिटिसिज्म का पार्ट है. I am no Prince Hamlet. Why Prufrock says this? So he says this because he accepts that Hamlet was a prince and he was some well-to-do thing in society. एक नाम था, brand था, important person था. I am a sidekick, I am insignificant, and I am not like him.
क्योंकि उसके पास जो काम करने की अथॉरिटी है वो मेरे पास शायद नहीं है. Is language dynamic? Yes, it is true. Language is dynamic. It travels from one place to another and it changes. Different people speak different languages in different countries. However, some words in every language are very similar to other words, but this happens only because of dynamism of the language. के language की ये dynamicy की वजह से ऐसा होता है. क्योंकि जो भी एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं एक लैंग्वेज जो कि लिविंग लैंग्वेज है, दैट इज अ लैंग्वेज बिकॉज इट इज चेंजिंग. चेंज का प्रोसेस हर लिविंग चीज के साथ है, तो लैंग्वेज भी एक लिविंग फिनोमिना है, तो चेंज का प्रोसेस उसके साथ भी है. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. So descriptive writing has got much to do with description of something. So in which you use the descriptive techniques, descriptive devices, and your use of 5 senses. For example, अगर एक पिज्जा है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, so if इसके ऊपर descriptive ऐसे लिखा जाएगा, तो we will describe it के like I saw somewhere a hot, steaming and delicious pizza, जिसमें pizza sorry, जिसमें अब जो स्टीमिंग, हॉट, डिलीशियस, राउंड, ये सारे उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है. और फिर हम उन 5 सेंसेस को इसमें एड्रेस करते हैं. कुछ इंसान की 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, टेस्ट, ये सारी चीजें जो हैं इनको इसमें यूज किया जाए. फिर इसमें डिस्क्रिप्टिव जो टेक्निक्स होती हैं उनको हम इसके अंदर एम्प्लॉय करते हैं डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ राइटिंग में. दे कैन बी स्टोरीज, दे कैन बी एसेज इन दिस डोमेन. Semantics and pragmatics क्या difference है? Semantics deals with literal meaning of something and pragmatics deals with intended meanings. So जो pragmatics है वो contextual meaning की बात करती है, empirical meaning, pragmatic meaning, और जो contextual meaning है उनकी बात करेगी. Semantics deals with the real meaning. For example, semantics जो है वो जो literal meanings हैं उनकी बात करती है कि जिसका हम बात करते हैं what are like antonyms. So antonyms वो words हैं जो कि एक दूसरे के opposite हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं gradable हैं, non gradable हैं, reversives हैं. So ये clear है उसके meaning से. Pragmatic deal करती है जिसका we talked about it once कि someone calls you and you're busy somewhere, you're in kitchen. So कोई बताता है कि आपके लिए phone आया, you just say that I am in kitchen. You didn't say that I am unable to take the phone call. You just said I'm in kitchen. So intended meaning was this, that you are busy and you cannot come and attend the call. Reader response theory. So reader response theory is basically it is a school of literary theory that focuses on reader, basically reader oriented है, और उनका जो experience है literary work का कि वो literary work को कैसे देखते हैं, और इसमें बेसिकली उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा है उस लिटरेरी वर्क का, किस तरह वो उसको पढ़ रहे हैं, किस तरह वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, हाउ आर दे लाइक वेदर आर दे लाइकिंग दैट वर्क और नॉट, और देयर व्हाट दे फील अबाउट दैट वर्क. तो ये उनका अपना जाती तरह से एक क्रिटिसिज्म है उस वर्क को जिस तरह वो उसे लेके चल रहे हैं. Then how to teach poetry in class? So this is very general question. But as a teacher we should know this कि हमको हमें क्लास में पोइट्री कैसे पढ़ानी है. If I'll be telling about it, so मेरा या और आप हर एक बंदे का इसमें अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. To me, best answer would be, first of all, you should tell them about the background of it कि ये किस एज से मुतासिर होकर लिखा गया, पोइट के उस टाइम में क्या सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, इन अ नटशेल, क्योंकि इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे इतनी डिटेल जरूरी नहीं होती. बट स्टूडेंट्स शुड नो कि अगर हम नेचर के बारे में पढ़ें, वर्ड्सवर्थ के बारे में, तो नेचर का क्या रोल था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए. देन यू शुड, व्हाट आई बिलीव इज, you should give the poem to the students to read. So once they should go through it themselves, कि वो खुद अपना एक आइडिया डेवलप करें कि उन्हें इस चीज में क्या फील कर रहे हैं, क्या थीम्स देख रहे हैं, क्या चीज उन्हें समझ आ रही है. Then you should read the poem with them, and then you, by indicating the meanings of the word and the things or symbols और जो भी चीजें यूज हुई, पहले आप उसके बारे में उसका एक टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर आप उसके अंदर से उसकी पोएटिक डिवाइसेस, सिंबलिज्म, ये जो जो उसकी एक इंटेंडेड मीनिंग्स हैं आप वो बताएंगे,
और फिर उसके ऊपर यू कैन हैव योर क्रिटिकल कमेंट्स कि इसमें ये कैसी नज़म थी, अच्छी थी, बुरी थी, पोइट क्या कहना चाह रहा था, और उसमें फिर हम एक क्लास डिस्कशन कर सकते हैं. 16-line sonnet. So a poem that is called sonnet, but is also of 16 lines. So how is that possible? So it is possible that ऐसी जो sonnets हैं उनको हम almost यानी stretched sonnet कहते हैं कि जो stretched होती है and it has 4 quatrains और 4 line stanzas और हर एक line में 8 syllables होते हैं. And coming next, if we swap Macbeth with Othello, what will there be a tragedy or not? So अगर हम इसमें Hamlet को put करें Macbeth की जगह, तो I guess there should be no tragedy, क्योंकि वो सोचता ही इतना है कि tragedy के जाहिर होने तक उसको चीजें clear हो जाती शायद. But if Macbeth is there, so there are again 2 point of views. कि अगर हम उसके impulse को देखें, उसके ambition को देखें, so वो भी लाई लग था, मैकबेथ की तरह बातों में आ जाता था, सॉरी ओथेलो की तरह, और जो उसको जिस तरफ लेके चलता था वो चल पड़ता था. So इस सूरत में तो ट्रेजेडी होगी. But if you look at the role of his wife, so उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी और मैकबेथ would do nothing, जो कि उसकी यानी जारी बात उसकी वाइफ का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, खातून रूल करती है. So she was ruling, तो मैकबेथ बिल्कुल उस हवाले से ऐसी गुस्ताखी ना करता, बल्कि वो कोई सवाल ही ना पैदा होता ट्रेजेडी का. डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एब्सर्डिज्म. सो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म है, दे बोथ एग्री दैट यूनिवर्स इज मीनिंगलेस. इनके अंदर ये चीज कॉमन है. बट एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है कि हमें अपने मीनिंग बनाने हैं इस दुनिया के लिए. इफ देयर इज नो मीनिंग लेफ्ट इन लाइफ, वी नीड टू क्रिएट वन. So absurdism क्या कहता है? It focuses on the tension between meaning, like being a meaningless universe, and our constant striving to find meaning. कि ये basically के tension क्या है? कि what gives rise to absurd, यानी जिसमें हम देखते हैं कि meaning कैसे बनेगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, गोडो आएगा कि नहीं आएगा. So this is a kind of thing that happens in this. And then, what is epic theater? So Brecht was the founder of this theater. This is a theater, like a form of didactic drama. So it presents a series of loosely connected scenes that avoid illusion and often interrupt the storyline to address the audience directly with analysis, argument, or documentation. So ये मिड 20th सेंचुरी में ये इसका राइज हुआ और उसके बाद it got good public acclaim. So these were important questions till now. Hope to keep coming to you with more questions if the interviews persist. Thank you very much. Stay tuned.